Okay. So, like we discussed yesterday, do you remember what all we told you about origami? Yes, ma'am. और कोई बता सकता है? Just a recap. कि हम Yeah, लोगों ने और discuss किया था, and origami, what is it about? origami is all about folding paper and making it into something, and kirigami is cutting and sticking and then making it into something. Oh, good. You picked it up right. Okay, so I think all of you Yeah, remember thank all you. of this. Yes. Others who haven't answered or didn't get a chance to answer, do you remember? Yeah. Yeah. So, like I said, we're going to be starting with these. Okay. These are modular stars, origami stars. Okay. So, all of you are ready with your materials. We told you to take 10 papers, Yes. right? 7.5 centimeters each. Yes. Yes. Okay. So keep all those papers ready. And the first thing that I would like to tell you is I'll be doing it. I'll be demonstrating it. Okay. You'll see it in a while. So just let me know if I'm going too fast. Just say wait. Okay. ये हम लोगों ने पहले भी कुछ किया था तो अभी अप्लाई करना है. If I'm going too fast, you should say wait, unmute yourself and say wait, or else just put it in the chat box. If at all you want me to repeat, just say repeat. Okay? If you are okay and if you get it, so thumbs up. And if you like it, okay? Yes, ma'am. Okay. Yes. So, yeah. All of you, can you see the paper now? Yes. 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 Okay. Yes, So the first thing that we have to do, okay, is fold the paper in half. So every time that you do origami, just match the edges properly and then crease it. So the folding that you do and the lines that you make with the folds is called as creasing. Okay? Let me know after you're done. Fold the paper in half and then crease it. Ma'am, size of the paper? Size of the paper was told to you as 7.5 centimeters. Okay, so if you have a bigger size of paper, that is fine, but 7 would be the preferable size. क्योंकि तुम लोग के पास either origami papers रहेंगे या chart papers रहेंगे, तो chart papers बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे because we need 10 papers. And अगर origami है तो directly अगर तुम लोग के पास ज़्यादा है तो you can use it the exact size, or else you can divide this in 4. Okay, the same paper, divide that in 4 and make 4 pieces out of 1. Okay, ma'am. Okay. So we basically need a square paper. I'm done. Okay. We'll Ma'am, just wait 2 more minutes so that the others can also be with us. So if you remember, memory, accuracy, right? Aim of the workshop, right? So this is going to be tested here. So if your folds are not even enough, somewhere your object in the end or the finishing is going to be compromised in the end. Okay, so see to it that you are not compromising with and keeping the accuracy proper before you crease it. Okay? Ma'am, we have to do this with the 7.5 centimeter wala paper or the 15 centimeter wala paper. 7.5 centimeter wala paper. So we have to do this, no? Yeah, just fold it in half first. I'll tell you step by step, so just follow those steps. Done folding in half. So again, open the paper. Okay? Next, fold the other half of the paper. So basically, when you open the paper after creasing it, you get a plus sign. Ma'am, 7.5 means this size paper. So you'll get 7.5 is this size.
मेरा पेपर बड़ा है, 7.5 is this size. Yeah. Okay, so that is the size that I have given you all, but then demonstrating this on a smaller piece of paper wouldn't have been clear, so I've taken a bigger size of paper. Okay. Ma'am, Yes. So you get a plus like this. So 1/2 like this, right? First fold that you did, you creased it, you opened it. Second fold again, other half, creased it, opened it. So this is after you crease and open, you get these two as plus here, these two lines. Here everyone followed? Yes. Shall we go ahead? yes, ma'am. Yeah. So next what you're going to do is, you're going to fold the same paper diagonally. Okay. So match the edges properly. Crease it. And open it again. So basically you get one more line here. Done? No, ma'am. Okay, so I'll wait. Jaldi thoda. We have to make 10. We have to follow the same steps on the other 9 paper pieces that we have. So we have to be a little faster so that we end up making the object that we've decided today. ठीक है? इसके बाद again crease and fold. Ma'am, On from the the other other side. Sorry? From the other side. Yes, from the other side. So basically you get an X now. Yeah. पहले प्लस था, राइट? हाफ हाफ करने के बाद अभी हमें X मिला, डायगोनल करने के बाद दोनों साइड पे. ठीक है? Everyone has got folds like these. Yes. Yes. Now what you're going to be doing is hold it like this, like एक finger ऊपर and बाकी का दो नीचे. Okay? Pinch, pull it inward. Pinch and pull it inward. So you'll get a, Ma'am, just show it again, please. yeah, I'll be showing it. One second. So you'll get a shape something like this. So basically you have your paper like this, right? मैंने एक उंगली इधर रखा, ये जो स्ट्रेट लाइन मेरा आ रहा है प्लस का वहां पे, और नीचे से उसको ऐसे पिंच किया. And then I fold it inside. So एक साइड से ये कुछ ऐसे मिला. Not getting it. You have your paper like this, all of Yes. you, right? So this is your diagonal and this is your plus sign. ठीक है? Yeah. What you have to do is, ये जो आपका प्लस साइन वाला लाइन है, यहाँ पे आपको एक उंगली रखना है ऐसे, एंड दूसरे साइड से आपको दो उंगली ऐसे रखना है, एंड देन फोल्ड इट इनवर्ड. अभी समझा? Yeah. हाँ. सेम थिंग ऑन द अदर साइड. ओके, सो यू फाइनल जो आपको मिलता है दैट इज दिस. तो अंदर Ma'am? से ऐसे आया है. See this? Yes, ma'am. ओके एवरीवन? Yes, ma'am.
Yes. Majority of them have right. Darshana, yours is right. Thank you, ma'am. Yes, Kranti, right. See this? Pooja, yes. So, Jidnya, yes. guys, if you've got it, the other 5 papers that you have, so this is one. Apart from this, the other 4 pieces of paper that you have to repeat the same process on it. Okay, so do it fast and let me know after you're done. In all, you'll get 5 shapes. Ma'am, we can use different colors. Ma'am, we have to Sorry? repeat the same. Yeah, Yes. so I'll be doing it with you. So take the next piece of paper. Ma'am, any color or the same Yeah. Any color, your choice. Even if it is same paper, same color, that is fine. Whatever is available with you. So if you remember, memory, याद आया? Yes, ma'am. Half. पहला step क्या था? Ma'am, fold it into half. Yes. Everyone? Yes, ma'am. Okay. Next था again. Opposite. Yes. Opposite side again, fold it into half. So here even your motor skills and your coordination matters, okay? Your hand-eye coordination, your brain coordination. So if you remember aim of the workshop, all these points are mentioned. Okay? So basically first 2 steps done. Yes, ma'am. Got a plus sign. Next क्या था? Ma'am, make it a cone type shape. Yes. Diagonally fold it. Mechanics. Sorry? आज बहुत शांत हो यार तुम लोग. आज सब काम कर रहे हैं मैम. बहुत You मेहनत. need 4 pieces. बहुत मेहनत ना. आज का मुहूर्त भी अच्छा है origami करने के लिए. So third step was your diagonal fold, right? Fourth step was again diagonal fold on the other side. Ma'am, Yes? you need 4 pieces. Yeah, 4 5. pieces. Total 5. In all 5. In all 5. You have 4 more pieces which you have to repeat the same process. One we already did. Okay, so this is the second one and the other 2 or other 3. Pinch and fold inside. Then again pinch and fold inside. और फिर इसको वापस सील कर देना वो क्रीज को, लाइक थोड़ा सा और फर्म रहने के लिए ना, जस्ट प्रेस इट अगेन ऑन द फोल्ड सो दैट इट्स वेरी शार्प एंड क्रिस्प. ये दिख रहा है? ओके. एंड अंदर से ये कुछ ऐसे रहेगा. Ma'am, how many we have to make in all? You have to make total 5 of these triangles. Is everyone able to make? Yes. I'm done with 5. Nikita ma'am is fast. Come on, you guys. वीडियो पॉज हो गया है. निकिता मैम मेरा वीडियो पॉज हो गया है. No. No. No, ma'am.
No, ma'am, my video is not paused. Divya, then there might be a network issue at your place. Just try reconnecting again. I guess Sana is also done with 5 pieces. Yes, I can see. I can see most of them ready. Leena ma'am, are you done? Riya is done. Yes, Riya. Just we'll wait for the next step to come in store. Leena ma'am, done. I'm done. Guys, even your faculties are interested in doing this, so even they are doing it side by side. If you see Nikita ma'am, yes, Prerna, we'll wait till the others finish. Nikita ma'am has already been doing it, so she's done with 5. Leena ma'am is done with 5. Leena ma'am, are you done with 5? Almost there. Okay. She's nodding, yes. Okay, Yukta. Divya, you might have a network problem, so it's okay. Just try connecting again. Okay, so should we continue further? Are you guys No, ma'am. ready? Ma'am, Okay, we'll wait. Okay, Shweta, we'll wait. No hurry. What time है अपने पास? घर पे तो बैठना है. यार सच्ची में तुम लोग आज बिल्कुल चैचा नहीं कर रहे. आदत नहीं है. पिछले 4 वर्कशॉप तो इतना आवाज किया कि समझ में नहीं आ रहा था किसको किधर देखे. मैम सबको ये लग रहा है आज भी नेटवर्क इशू हो जाएगा फिर क्या होगा? अरे नहीं, आज पूरा आज कुछ नहीं होने वाला है. कुछ नहीं होगा. इसलिए सब डर गए हैं ना. नेट मेरा सेटअप लाइक दिस कि कुछ नहीं हो सकता. आई ऑन द फोन राइट नाउ, तो फोन पे कुछ गलत नहीं जाता है. ओके मैम, थैंक यू मैम. I know yesterday was way too much of a problem. Even we were laughing on that later. आधे जन निकलने के बाद नेटवर्क ठीक हो गया था कल. हाँ ना, और फिर बोल भी रहे कि सिखाओ. Okay, so done? ma'am, last. Okay. So 2 more minutes we'll wait. निकिता मैम फाइनल दिखाओ आपका. मेरा तो हो गया. ये मुझे नहीं दिख रहा यार, एक सेकंड. Not able to see. हाँ निकिता मैम शो. See no, it's there only. निकिता सालुंके वाला आईडी पे देख. वो बहुत पीछे है. Hey यार, I have to switch to screens, which is very irritating on the phone. निकिता मैम अभी आपके फेस के सामने. निखिल सर, put me on spotlight. निखिल सर. INFD वांशी के इस पे लो. ये. Nice. Okay. अच्छा. Oh guys, are you ready with the 5 pieces of a triangle? Okay. 1 sec, ma'am. Yes, ma'am. We are ready to do. I'm Can you see the paper properly? Yes. I'm just a minute. Okay. Okay, so the steps are easy. Again, if you see, memory, right? So पहले हम लोगों ने plus किया था, then we did a diagonal fold, right? So now it is going to be ulta. First we are going to be doing the diagonal fold, and then we are going to be doing the plus. Okay? So again, diagonal fold. Ma'am, 7.5 centimeter paper. Yes. Yes, The same. another 5 pieces that we have remaining. Okay, तो उसका ये चीज बनाना है. That is square. ठीक है, so पहले ये वाला diagonal fold. So I get something like this. I open it again. I fold it on the other side diagonally. So I get an X first. Mine done. Ma'am, I didn't do it. Now is it right?
Gita ma'am, please can you Who's say? this? Yeah, I'm just checking. May I know who's this? Yeah. May I know your name, please? एक मिनट. Is that you, Jia? जिया, आपके पहले 5 हो गए हैं ना? Only 5. Shweta, what we're supposed to do is Too much big. diagonally fold it. जो हम लोग ने पहले प्लस किया था, हाफ हाफ में फोल्ड करके एंड फिर डायगोनल करके. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डायगोनल फर्स्ट एंड देन द प्लस. तो पहले डायगोनली इसको हाफ और हाफ में फोल्ड करना है दोनों साइड से. Ma'am, then half. Ma'am, how much that doing? We have to make 5 of these. Yeah, 5. Just follow the steps. There's a minute difference here. We don't have to make a triangle. Okay. तो फिलहाल के लिए सब लोग के डायगोनल्स हो चुके हैं. Yes. After you finish off with the first 5, then you have to follow the steps which Ankita ma'am is showing right now. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, correct, done. डायगोनल्स Yes, हो चुके हैं. Krishna, right, अभी right. half. Okay, so that is plus. So half किया. Okay. I open it. अभी horizontally half किया. फिर उसको क्रीज किया वो फोल्ड को. And then I open it. ठीक है? तो similar lines मिले. Yeah. अभी इसको Yes. one second ना, just let me crease the paper again. थोड़ा सा ओपन अप अगर हो रहा है आपका पेपर तो आप वापस उसको फोल्ड्स रिपीट कर सकते हो. ओके. अभी आपको आपका डायगोनल जो लाइंस आ रहा था वो आपकी तरफ फेसिंग रखना है. ठीक है? देन ये स्क्वायर दिख रहा है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज व्हाट वी नीड. सो ये ऐसे फोल्ड होगा. फिर ये वाले लाइन के यहाँ से बीच में से फोल्ड होगा. Ma'am, not getting. Okay, one second. We have to make a square shape out of it by folding. Yes. Yes. Ma'am, we have to make both of them. Ma'am, this way. See, No, ma'am, how much spaces are making? Yes, Sana. Yes, Sana, you're right. Ma'am, is this like this? guys, just pay attention one more time. I'm repeating it. Yes, Ma'am. Sana, right. ये साइड से ऐसे फोल्ड करना है ताकि आपका ये वाला जो पोर्शन है ये अंदर जाएगा. ओके. ma'am. पोर्शन है वो अंदर जाएगा. Getting that fold. And you'll get a Yes, square. Neha. Right. Ma'am, like this. Yes, Jeet. Right. ठीक है. तो अंदर वापस ऐसे कुछ फोल्ड Ikra, आएंगे. yes. Nisha, yes. Ikra, yes. You need all 4 of this. Yes, I need 5 of this. Yes, 5 of your Shalaka. triangle and 5 of your square. So this is the combination that we're going to end up. Ma'am, like this? Yes, Shrishti. Yes. Okay, so guys, if you remember again, you have to do the same with the remaining papers. So I'll repeat it again. इतना सबको समझा है? ये वाला आ गया? Can you please repeat one more time? I'll be repeating. Just take the next piece of your paper.
the next 7.5 centimeters that you have, another square. Okay, तो इसमें हम लोगों ने पहले किया प्लस, सॉरी डायगोनल, Ma'am, we have to make one more. we have to make 5 of the same again. जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया The था, square one, na? सॉरी, The square one we have to make more 5. हाँ, yes, Okay, ma'am. total 5. Okay, so ये diagonal हुआ. Then I open the paper again. दूसरे side पे I'll be folding. ठीक है, then I'll open it again. So मेरे पास अभी फिलहाल के लिए x आया है on the paper. ठीक है, अभी इसके बाद half, okay, and the other half. Ma'am, we have to do this on different 5 papers, na? The other 5, yeah, the Yes. other 4 pieces that you have to repeat the same thing. So you'll get in all 5 pieces of your triangle and 5 pieces of your square. Reena ma'am, are you done? Ma'am. Ma'am, can you just repeat the triangle one? There's one girl who Ankita has ma'am, joined. Ankita ma'am, one request. Can you change the paper? Color I of mean, the paper? yeah, Okay, I'll just do that. because black है ना? I think black or blue? Black. Yeah, तो वो दिख नहीं रहा है. अच्छा ठीक है, I'll change the paper. Ma'am, by the time other people are completing the other 4 or 5 sets left, can you just repeat the triangle one? There's one girl who has missed the first part because of the connectivity. I guess Divya might have because she had So disconnected. Akshata. Okay. So Akshata, for you, we're making the triangle one. If you want to just memorize. Akshata, are you there? Akshata, there? Yes, she's she is there. Okay. So Akshata, just give me a minute. Okay, so what we have to do is we have to fold the paper in half first. Okay. Divya, even you can see and repeat the same process. Half. Okay. Then the other half. Okay, so basically after you open, you get a plus sign. Idhar and idhar. Okay. Next, you fold the paper in diagonal. Okay. And again you fold it in diagonal. तो आपको एक प्लस मिलता है and एक x मिलता है. ठीक है. After this, half करके ये वाला जो पोर्शन है
इसको अंदर के साइड पे बेंड करना है एंड फोल्ड करना है. So you get something like this. Same thing. Repeat on the other side. ये वाला चीज को ऐसे करके you fold it. So this is how you get your triangle. And अंदर से if you see, you'll get this. Akshita, did you? Is it clear to you? Yeah. Yes, she got it. Yeah. Yes, Devi also got it. Yeah. So are you okay? Like, have you done the square? मैम फिर से बताएंगे क्या, क्योंकि मिस हो गया, अभी वीडियो पोस्ट था. Okay. Okay. Fine. So पहले. Ma'am, done. Yes. So There are people who have finished the squares also. Okay. Guys, squares के लिए पहले diagonal fold. Okay. तो इसको सील करना है. Then again दूसरा diagonal. वापस उसको सील करना है. ठीक है. तो आपके पास X में क्रीजेस आ गए हैं. ठीक है. उसके बाद हाफ एंड हाफ. तो अभी मेरे पास एक प्लस का क्रीज होगा एंड एक एक्स का क्रीज होगा. ठीक है. अभी इसको डायगोनली प्लेस करो एंड फोल्ड इट. ये साइड से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया तो ये कुछ ऐसे मिला. ओके. द सेम थिंग, इसको मैंने ये साइड से फोल्ड किया एंड ये कुछ ऐसे मिला. एवरीवन? Ma'am, can you show it once again? Yeah. पहले diagonal fold, then open, then again diagonal fold. I'm done. Then open, then half fold, then open, then again the other half fold, then open. Okay. Now just place it diagonally, ऐसा rhombus जैसा रहता है वैसा, and then just fold. ये साइड से अंदर की तरफ तो कुछ ऐसे मिलेगा. ये साइड से अंदर की तरफ कुछ ऐसे मिलेगा. ठीक है. Did everyone get it? Okay, ma'am. All of Thank you, you. 5 pieces done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am. Majority Yes, ma'am. of you must have finished and you must have realized also कि almost the steps are similar. सिर्फ जो point, the point which you're pushing inside Yes, is ma'am. a bit different. Okay. So now you have a triangle and squares, right? 5 of triangles, 5 of squares. Take one triangle and one square in your hand. Thanks, Riya. Okay. So अभी ये जो point है, okay, that is what you have to put in this. So can you see? ऐसे. तो तुम लोग का स्क्वायर का जो पोर्शन है, इसको ये दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स है ऐसे वाले. Ma'am, can you do that again? Yeah, guys, I'll be repeating it, so don't worry. ये वाला जो साइड है वो दो ट्रायंगल के बीच में. ठीक है. So I'll show it one more time. Okay, I have these two papers.
and this is how my partition is. यहाँ पे 2 folds है, right? और यहाँ पे इसके 2 folds है. What I'm doing is first inserting the triangle, and then ये वाला जो fold है उसको वो 2 triangle का जो portions है ना, this thing, इसके बीच में हम put है. मैम Can you show it on the camera? मैम आपकी आवाज प्रॉपर आ रही बट वीडियो पॉज हो जा रहा, कुछ कैसे कर रहे हो या कैसे बना रहे हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. निकिता मैम मेरा वीडियो पॉज हो रहा है. No, it's not pausing. Okay, so I think उनका नेटवर्क इशू होगा. ठीक है. Okay, I'll show it again. ये आपके पास स्क्वायर है, ये आपके पास ट्राइंगल है. ठीक है. आपके पास ऐसा 2 पोर्शंस है अंदर के साइड पे. इवन ट्राइंगल पे आपका ऐसा 2 पोर्शंस है. तो बेसिकली यू हैव टू इंटरलॉक. ठीक है. तो ये वाले पोर्शन में आपको वो स्क्वायर का जो पोर्शन आ रहा है अंदर का फोल्ड, that is what you have to insert here this side, and this side you have to insert the other portion of the square. तो अगर मैं इसको खोलने जाऊँ, मैम see this, तो ये कुछ ऐसे बैठ रहा है. This type, ma'am. As you like, ma'am. Ma'am, basically we have to overlap both the folds, which we did, right? Can you see this? Can you see this now in the camera? Yes. मैम ऐसे. Okay, everyone. Yes. So it was just like a fish. Yes, Jia. Yes. Megha, yes. Ma'am, Dani. excuse me, ma'am. Yes. We have to push that all inside. No, we have to push it through so that it touches the inside of the square, of like the square. Yes. Okay. All the way through, no. Yes, all the way through. And ये वाला जो right. ये दोनों के बीच में आपको इंटरलॉक करना है ऐसे. Chalaka, yes. Ma'am, it's okay. Dani, your shape is a bit different. I guess you have just interlocked it in some other way, I guess. Okay, ma'am. Okay. ये दिख रहा है? मेरा ऑरेंज वाला is the square and the brown वाला is the triangle. Ma'am. Can you just Yukta, check it, yes. ma'am? Yukta, yes. Okay, ma'am. Who else? Sana, yes. Sana, yes. You're right. Ma'am. Ma'am. Sonam, yes. Ma'am, Pooja, yes. This way? Okay. Ma'am, Yusu here. Okay, you say yes. You're right. Ma'am. Who's this? And we are supposed to do this with all 5. Yes, Priya, yes. Ma'am, look this, ma'am. This type, ma'am. Whoever has Yes, Jeet, yes. Please interlock your triangle and your squares together in this way. Like this. Yes. Okay, so you'll get 5 fishes. Yes, ma'am. Finally. Yes. Yeah. So you Dani, can no. see this if you have. Darshana, yours is again a bit different, I guess. So, Shamit, वो triangle को और अंदर डालो. This one. Guys, Push it down. Push it the down. center point of your square and your triangle should join. See? If you see, मेरा triangle पूरा square को touch हो गया है. पूरा वो point जो है यहाँ का, both of them are meeting. Okay? Yes, now you got it right, Darshana. Thank you, ma'am. Yeah, I'm done. Anybody else is still stuck with this step? I guess, are you guys ready? Yes. Wait. Yes, ma'am. Continue with other basic other shapes. The same step. The other 4 pieces that you have, 4 pieces of your triangle. and 4 Same pieces step for other also. We have to do the same step for other 4 also, no? Yes. Okay, So ma'am. basically you'll get 5 of this. Okay, ma'am.
ये जो फिश शेप है ऐसे आपके पास 5 रहेंगे. अभी मेरे पास फिलहाल के लिए 2 है. I'm done, ma'am, with 5. ओके आपके पास ऐसे 5 रहेंगे. Ma'am, Okay, can you see Pooja, me? we'll just wait for the others to finish it. And फिर ये creases को ना थोड़ा सा ये थोड़ा सा bounce type होगा, थोड़ा खुल जाएगा. तो what you can do is just press and then make it a little more prominent. Yes, निशा का right है. सना का भी Ma'am. right है. Yes, who is this? Okay, okay, okay. Thank you. Okay. ठीक है, तो सबके पास ऐसे कुछ 5 pieces हो गए हैं. Everyone? Okay. Yes, ma'am. Now what we have to do is ये जो हमारा point ऊपर आ रहा है ना square का, you see हर एक का ऐसा कुछ point आता होगा. Yes. हाँ, उसको आपको अंदर की तरफ fold करना है ऐसे. Can you see everyone? Yes, ma'am. हाँ, ये चारों साइड पे point आ रहा है ऐसा, right? तो चारों पॉइंट्स आपको अंदर की तरफ फोल्ड करने हैं और ये बाकी 4 के लिए भी होना चाहिए. So whatever step I'm showing it on with one. Ma'am, do we have to stick that? No. Sorry, You don't have to stick it. Just you don't fold have it. to stick. We're doing origami. Remember, no glue. Only paper fold. Ma'am, do we have to fold it from all the 4 sides? Yes, all the 4 sides. Ma'am, this way. Ma'am, for all 5 pieces, we have to do the same. Yes, all the 4 sides. Ma'am, this way. Okay. Yes, Darshana, right, but now fold the other 2 sides also. Okay. From inside it will look something like this. Ma'am, can you show one? Yeah, I'll show it one more time. Okay, so you have your square का edge बाहर, right? वो सिर्फ आपका जो अंदर का पेपर आप उसको वापस से उसमें एक बार करके दिखाइए ना अंदर. I'm showing it. नो मैम, वो दोनों को जॉइंट कैसे किया है? अच्छा, joint. या Okay, so I have one square, one triangle. ओके. अभी ये वाला जो पोर्शन है ट्रायंगल का, जो ये वाला पार्ट है, ये ओपन करने के बाद लाइक यू हैव साइड्स में ऐसा कुछ ना. ओके, सो आई एम जस्ट इंसर्टिंग दैट इनसाइड. Ma'am, we need to do that for all. Yes. All 4 sides and all the other 4 pieces that you have. इसको सिर्फ ऐसे. Got it? यस यस यस, थैंक यू. तो बेसिकली ये वाला जो तुम लोग कर रहे हो, ये एज जो ट्रायंगल का है वहां तक आपका ये वाला पॉइंट फोल्ड होना चाहिए. Okay. Like this. The same way other side. Once you get hold of your papers and your this memory thing, you might have realized तुम लोग का speed भी increase हो गया है. Yes, ma'am. And तुम लोग का coordination भी. Done, ma'am. यार जब तुम लोग बड़े शांत हो आज. I'm done. इतना engross हो गए हो क्या बनाते बनाते? No. Ma'am, we are sincere students. हम मस्ती नहीं करते. Nikita, are you talking about you? Yes. Yourself? Are you talking about yourself? Yes, I'm talking about me and everybody. I'm done. Okay. तो अभी क्या करना पड़ता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सब साइड से फोल्ड करके ना सिर्फ वो क्रीजेस को थोड़ा प्रॉपर करना है. Yes, ma'am. Okay, just make it a little more sharper. You'll get Okay. something like this. 5 of this. Okay.
I have 1, 2, and a few pre-prepared ones. 3, 4, and 5. Just a minute. Yeah, we'll wait. I'm just showing you mine. I'm ready with all of the 5. Me too. Even I am done. Nice. मैम आपने पहले ही Ma'am, I'm also ready done करा with था। it. मैंने पहले किया, but then आप लोगों के साथ भी मैं बना रही हूँ यार। नहीं मैम, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैं आपको पता था कि एक में सब गधे हैं, नहीं मानेंगे एंड 2 में समझ जाएंगे। It is just like, Ma'am, is it correct? I'm done, ma'am, I'm done. okay. Ankita ma'am, do we have to fold it from all the 4 sides and make it like a Yeah, plus? just sharpen it, just fold it like ऐसा किया, एक बार ये triangle किया, फिर ये triangle किया, फिर ये triangle किया. Okay, so like just flip करते ना उसको थोड़ा Yes, निशा का बराबर है. Point है ना ये वाला, ये sharp हो जाएगा. ठीक है स्टारफिश नहीं, इसका बनाने का उठते जोन पेनुएगा नेट बंद करू विशाल, नेट बंद करू. ओके, तो अगर आप सेम कलर ले रहे हो तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे. ओके, एंड अगर अलग अलग कलर लिए तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे. So it is choice how you want to go ahead with. Done, everyone? Last next. Okay. तो अभी हमें ये 5 पीसेस को एक साथ इंटरलॉक करना है ताकि हमें ये चीज मिले. तो कोई बता सकता है ये कैसे मिलेगा? करके with glue. Glue? No, we are doing origami. If you remember. Interlock. I guess we interlock the corners. I'm doing it. I can see Bhagesh joining it this way. जो gaps है उसके बीच में Oh, ma'am. papers डालेंगे. Yes. सबके हो चुके हैं? Riya, just keep it away from your dog, I would say. 4 points join करके. Okay, 4 points कैसे? ऐसे? ऐसे? जो 4 I'm putting one triangle, one right triangle into the one. जो like this. के बीच में gap है. हाँ, okay, fine. We'll solve the mystery very easy. ठीक है? आपके पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बराबर? कलरफुल. ठीक है, एक ऑरेंज है, एक येलो है, बराबर? एंड यू हैव अ पॉकेट हियर जो रेड से बन रहा है, राइट? तो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑरेंज वाला रेड वाले पॉकेट में अंदर डालना है. ओके मैम, हाउ अदर साइड? सी आई एम डूइंग इट. तो आगे वाला basically this point orange wala is going to go in the red point, red pocket here, and ये वाला yellow जो दूसरे साइड पे दिख रहा है मेरे को is going to go in this yellow pocket here. तो दोनों साइड से बेसिकली एक आगे का एक पीछे का ऐसा रहेगा, एक ये और एक दूसरा वाला ये, राइट? Okay, got it. Yes, ma'am, got. So if you have pins, guys, if you have pins, what you can do is just use pins to interlock it together. Like suppose I'm doing it with hand, but जब मैं ये साइड का करने जाऊँ ना तो शायद ये साइड का निकल जाएगा because you're beginners. ठीक है? So what you can do is just एक बार दोनों साइड से घुसाने के बाद, can you see how this is seen? Yes, ma'am. Both the sides it's seen the same way. Ma'am, Yes. is this right? Ahead. Yes, ahead. This is right. तो दोनों साइड से कुछ ऐसे दिखेगा. आपको दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक होंगे ऐसे. Ma'am, this way. Ma'am, can you show it Yes, again? Srishti. I'm just confused. I hope everybody are locking it from both the ends.
Yes, I ma'am. have these 2 points. What I'm doing is just putting it in the opposite pockets that I have. आगे and पीछे से दोनों साइड से. Okay? And ये कुछ ऐसे. ठीक है? Now when you might notice यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है. Those who don't have UPIN specifically, and because you're beginners. ठीक है? तो हम सब एक्सपेरिमेंट करते हैं when we're designing things. I have a UPIN here. Maybe many of you might have, many of you might not have. Okay. Need not necessary कि हो ही. अगर है तो अब आपका एक साइड सील होने के बाद ना बस ये UPIN से दोनों को लगा देना ऐसे. Okay, so when you're putting the next edge into one another, ये निकले नहीं. And अगर आपके पास UPIN नहीं है, so it is patience testing. You'll have to keep patience and try putting it slowly, bending the points. ऐसा bend करो और फिर एक दूसरे में डालो ठीक से पकड़ के. ये दिख रहे ये points को ऐसे bend करके, then try putting it in one or the other pocket. ठीक है, one by one. So let me see who has a lot of patience and who doesn't give up and completes all the other pieces together. मैम एक बार फिर से दिखाएंगे सेकंड वाला. हाँ. See, you have these two. मैंने ये वाला साइड पिन से सील कर दिया है. ओके. दूसरा वाला साइड अगेन सेम जैसे हम लोगों ने पहला वाला किया. इसको इधर के पॉकेट में डाला एंड ये पॉइंट को आगे इधर के पॉकेट में डाला. वी हैव टू डू द सेम थिंग. ठीक है मैम. यस मैम. डन. डन. Yes, Yeah, Ikra, ma'am. yes. Ikra got it right. She made the whole thing. Wow. Ma'am, Crack the code, Who Ikra. else did it? So what you can Thank do you, is ma'am. Yes, difficult जा रहा है ना, तो what you can do is just fold it ऐसा. ठीक है, ऐसा फोल्ड करो और फिर उसको घुसाने की कोशिश करो एक दूसरे में. Also, well, these are really very big ones. Ma'am, is this right? Ma'am, ध्यान नहीं दे रही. Hey, मैम. Jia. Yes, Jia. हाँ. मैम कृषि और ma'am, Pooja here. Krishi, surname? Yes, Pooja. Yes, Pooja. अंकर या This, Oh, but I can't say Krishi. is it right? Pooja Chagas. तो अगर बहुत ज्यादा पेन से तो what you can do is दोनों साइड हाँ, Krishi, I saw. Yes, yes, ऐसा Krishi. बनेगा. Okay, after you seal it from both the sides, it is going to look something like Krishi, this. show it again. Okay. Krishi, आपने और अंकिता मैम, can you just check this because इसका shape थोड़ा अलग दिख रहा है. Second ना. Krishi. Ma'am, Pooja. मैम जीत हियर. आपने उसको फ्लैट कर दिया है, थोड़ा सा ओपन अप करो उसको ऐसे. कैन यू सी कृषि? इसको थोड़ा सा ओपन अप करो ऐसे साइड से. अभी आपका सब ऐसे है. ओके, फ्लैट है, सारे फ्लैट है ऐसे. उसको थोड़ा सा ना ऐसे ओपन अप करो, लाइक पॉइंट्स को ना थोड़ा बीच वाले, सेंटर वाले. हाँ, राइट. तो और अच्छे से उसको फोल्ड करना, जहाँ तक वो बीच में से आ नहीं जाते. सी लाइक दिस. व्हेन आई एम लुकिंग एट द स्टार, नो, आई हैव टू एक्चुअली लाइक ऐसे आपको फोल्ड करना पड़ेगा. सी, आफ्टर यू फोल्ड इट साइड से उसको ऐसे भी फोल्ड करना, बीच में से सारे पकड़ के. ठीक है मैम, वो फोल्ड को ऐसे स्टिक नहीं करना है क्या? नहीं, because this is origami, it is always interlocking and folds. You cannot stick it. Okay, ma'am. अगर आप स्टिक करोगे तो maybe after a point of time it might open up again या निकल जाएंगे. So how many of you are? All side we need to interlock. Sorry. Ma'am, from all sides. Sorry.
I'm not able to get what you're saying. Ma'am, Pooja Chaurasia here. Can I do from all these sides interlock? Yeah, sure. Go ahead. If you're done with one, if you've achieved this, start interlocking the other stars of yours that you have. Ma'am, all done, but can you see once? All done. Can you see one? Ma'am, how will we interlock the second one? Nikhil sir put Pooja on spotlight, no? Pooja Chaurasia. Guys, Ankita ma'am, now can check. done with 2, we'll just start. Just let me check first, and then we'll do the second one. The third one. Nikita ma'am, is Pooja right? Yes, her shapes are right. Now she has to interlock the other sides also. One Just surface she open got. it after you're done sealing it or interlocking it in one another. Just open the fold. I'll tell you how to do that also. No. She had just circled one circle. अभी जो बचे हुए points है वो उसको interlock करने हैं. So basically अभी ये मेरा तीसरा है. I have these 2, right? These 2 I have the third one. Again same way. इसको इसमें डाला. And ये पीछे वाला. So one is brown. One of the sides is brown, which I am putting it in the pocket. And second one is the yellow one, which I am putting it in the orange bracket. ठीक है? So I have to just keep pushing the paper, and this is how it has got interlocked. ठीक है? I hope everyone is getting it. काफी मेहनत का काम है. Ankita ma'am, after interlocking like the first star, what we have to do with these? The other also you have to join. Because I interlocked. Ma'am, I did, but one is left. No, we have 5. Yeah. So interlock all the 5 to each other. I interlocked these 2 and these 2, so this is left. No. So then join all of them together, no, the same way. Ma'am, can you demonstrate it? Yeah, 1 second. I'm just on it. I've done with the. I'm just joining in the third part. 1 second. Okay, ma'am. So basically, this is how I'm pushing it further. Okay. So this is how my one piece, second piece, and third piece has got interlocked. Ma'am, like this. Ma'am, Jeet here. Okay, so for now, 3 pieces, I've got something like this. Okay. Hello, ma'am. Yes. Just continue with the other pieces. Okay, ma'am. Okay. Then the 4th piece, what I'm taking is this. Okay. Again, same pattern. एक दूसरे के pocket में वो point डालना है. Okay. The next portion again. किसके किसके पेशेंस छूट चुके हैं? कितने जन ने पेशेंस छोड़ दिए हैं? पेशेंस छोड़े एक करो तो पीछे से दूसरा निकल रहा है. That will happen. That is what I told you. ये first time है, beginners हो तो शायद ये होने के possibilities है. Otherwise then next time जब try करो तो you can try it with the U pin. Sure. Ma'am, like this. Who is this? Prishti. Yes, Prishti. Ma'am, like this.
हाँ, अभी आपने पूरा एक सर्कल खत्म किया। अभी जो पॉइंट्स बच रहे हैं ना ऐसे बाहर, ये देखो ये बाहर आ रहे हैं ना जो पॉइंट्स, यस मैम। तो भी आपको ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ। इंटरलॉक दोज आल्सो। ओके मैम। Okay, so I am done with 4. If you can see 1, 2, 3, 4. तो अभी मेरे ये दो edges बचते हैं, right? And I have the last one. So दो इधर जाएंगे and दो इधर जाएंगे, ठीक है? Like you've done with the others. Yes. Yes, Shalaka. Oh, how big she has made. मेरे को दिख नहीं रहा है यार. I can't change the screen. It's okay. Leave it. Shalaka, send me a picture, please. It's like a frame. Okay. Okay. And I would love to see it in your status. Ma'am. Me too. By the way, she's our present student and she is one of the status cards, okay? So look at the status. Ma'am. Ma'am, Yusuf. For the day. Yusuf, 1 minute. Where are you? Yes, Yusuf. Right. She's got it right. All the sides she has connected. Yes. Now just open up those pockets. जिद्दी behave because कर वो रहा है. flat हो गया है. हाँ, उसको They are थोड़ा very tough to open up. But at least flat flat वाला बन गया है. और जो pockets है, थोड़ा उसका open करोगे तो same shape मिलेगा. थोड़ा edges जहाँ पे meet हो रहे हैं ना, just थोड़ा उसको खोल देना है, like just with pinch, just make it sharper, तो अपने आप को sharp shape दिख जाएगा. Like this. Yes. Yes, Srishti. आपने open किया है pockets को? हाँ मैम. Can you just show me the pockets? Yes. But बहुत सारे U-pins हो गए अभी. Yes. But it is ज़्यादा आसान हो जाता है इसको अंदर सील करने के लिए, नहीं तो ये खुलता रहेगा. मेरा खुलते ही जा रहा है. Ma'am, they are not opening. जो किया था वो भी निकल गया. हाँ, same. होगा क्योंकि you guys are beginners and ये पहला थोड़ा sealing and all में थोड़ा सा issue होता है. Okay, so as on you get a little bit of hands-on with origami. Yay! I got one pocket. Finally. Yay! मैम सोनम निकल गया ये तो. मैम सोनम. Yes, Sonam. Oh wow, she got it right. Check hers, no? This is very nice. See, all the colors and the shape is also very perfect. Sonam, please keep it on the screen till I swap and then. Oh, nice. Yes, perfect. Thank you, ma'am. Wow, wonderful. Shalaka, बघू तुझं. मी त्याच्यानंतर काय केलंच नाही, मला समजत नाही त्याच्यानंतर काय करायचंय. बघू तर आता मी मगाशी बघितलं नव्हतं ना, आता दाखव तर. I don't know how many of you understand Marathi, but we talk in all sorts of languages, okay? Shalaka, show. मॅम ह्याच्या थोडं मोठं Guys, you might have got this shape, right? Everyone, अभी आपको क्या करना है पता है? ये जो सीलिंग है ना, इसको सिर्फ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाना है. ये दिख रहा है? This. तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स है ना, उसको थोड़ा सा पिंच करके. मॅम हे आउटसाइड असं फोल्ड करायचंय. आउटसाइड, हाँ आउटसाइड म्हणजे ते वरती उठेल. Okay, so basically what she's asking is अंदर फोल्ड करना या बाहर. I would say बाहर, क्योंकि फिर तुम लोग को ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर उठा हुआ चाहिए. ओके, इसीलिए हल्के हाथ से सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे यू कैन जस्ट प्रेस इट सामने का स्टार पकड़ के, ताकि आपका स्टार क्लियरली बीच में से दिख के आए. मैम. यस, शहर का भी सही बना है.
Very क्रांति का perfect. भी करेक्ट बना है. Yes, क्रांति, राइट. If I touch this, it's gonna break apart. Then What do I do? Can you show us, Riya? Yes. Riya, can you show? No, it won't break. Don't worry. Just hold it. She's stressed now. अब बहुत मेहनत हो I'm गया. Ikra here. Correct step. You've reached the correct step. Just थोड़ा थोड़ा ना जहाँ पे folds है ना, उसको सिर्फ थोड़ा साइड से ऐसे fold कर देना. ऐसे and ऐसे. कुछ नहीं होगा. Don't worry, it's paper. There's out. भाग्यश्री का भी अच्छा बना है. भाग्यश्री का भी अच्छा बना है. एक सेकंड है यार. Riya Kumari, yes, hers is also very right. Perfect. I do not think it's interlocked properly because it just keeps falling apart. That will come out of practice, Riya, now. क्योंकि if I Ma'am, press look here. What you Ma'am. can do is, what you can see, because we can't staple or anything like that, our folds have to be very prominent and the paper might be an issue here, because आपका अगर stiff paper रहेगा तो वो folds अंदर properly interlock होंगे. Okay, अगर थोड़ा सा soft हो गया रहेगा ना paper handling की वजह से तो वो शायद खुलने It's apart now. खुल गया. Ma'am, जीत here. Ma'am. जीत आपका अच्छा बना है. Perfect. अब उसको सब open करो pockets को. It's flat right now. Sorry, ये वाली pocket, ma'am. Sana, yes, you're doing it right. Just open it. हाँ, pinch it on both the sides and do it. अंकिता मैम, जीत को सिर्फ pockets open करना बता दो. क्योंकि उसका flat बना है. Ma'am, if I yes, Shalaka, right. Ma'am. Yes. Ma'am, if I want to try it once again, so I can take any measurement. It's not necessary. Yeah, you just have to have equal squares. Equal squares, na? Yes. अंकिता मैम से जीत को थोड़ा ओपनिंग बता दीजिए. His car has got flat. तो बेसिकली मेरा कुछ ऐसा है अभी फिलहाल के लिए, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what I'm going to be doing is, ये जो ends है ना ये, Yes, ma'am. जहाँ पे joints आए हैं उसको मैं ऐसे pinch करूंगी फिर. जीत, did you get it? Yes, ma'am. Not sure. हाँ, तो वही सेम चीज सब जगह रिपीट करनी है. Okay, ma'am. लीना मैम, आपको आ रहा है क्या? मेरा तो सब जगह से निकल रहा है. अंकिता मैम, मेघा यर. मॅम माझं असं झालं. मॅम इकरा हियर. Shalaka got it right. Megha got it right. मी मध्ये डिस्कनेक्ट. जिया. हाँ. अंकिता मैम, जिया का कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? हाँ, मध्ये डिस्कनेक्ट झालेलं मला व्यवस्थित नाही दिसलं. एक सेकंड, I'll show. Where is Jia? 1 second, let me search Jia. हाँ, जिज्ञा है जिया निकिता मैम. Jia, she is on spotlight right now. Jia, just show us your. Show it to me once. हाँ, Jia, you folded it this way. See what you've done is, हाँ, आपने इसको ऐसा कुछ fold किया है. एक सेकंड मैम. तो ऐसा खोलो. कैसा खोलना है? ये ऐसा. दिख रहा नहीं है मैम. ये दिख रहा है? ऐसे. एक सेकंड. आप दिखा सकते, एक बार उठा लोगे आप उसको. ये बघा. और कैमरा के सामने दिखाओ. One second. Sir, put Jia on spotlight. Wait, I'll have to scroll again. मैम. One second. निखिल सर, आपने उनको स्पॉटलाइट पे डाल दिया है क्या? हाँ, डाल दिया है. मैम, ये तो खुल गया सब. Her shapes are a bit different. जी नहीं, ऐसे नहीं. आप मेरे को एक बार ऐसे दिखा दो. कैसे? आप अभी फिलहाल ऐसे दिखा रहे हो ना, मेरे को ऐसे दिखाओ. उसको उठाओ. हाँ, show it from the other side.
को डाला राइट? नहीं, ट्रायंगल दिख रहा। स्क्वायर में आपने ट्रायंगल डाला ना, मतलब ऐसा जब भी आपके पास स्क्वायर था उसमें ट्रायंगल को डाला राइट? ऐसे या आई थिंक शी इज यू आर ऑन म्यूट। हाँ ऐसे ही डाला, आपने बताया वैसे ही डाला। नहीं, आप एक बार ऐसे पकड़ लोगे उसको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो ठीक से दिख नहीं रहा है। ये जो आपका ओपनिंग साइड है ना, वो आपका इधर आ गया है, वो अंदर के बाजू आना चाहिए। आप उसको एक बार खोल दोगे, उसको वापस 5 पीसेस अलग अलग करो। मैम आप दिख रहे नहीं हो मुझे। निखिल सर स्पॉटलाइट प्लीज। हाँ अभी दिख रही हूँ। ओके, तो आपके पास कुछ ऐसे पीसेस हो गए रहेंगे ना, आई जस्ट शो इट टू यू अगेन। आप एक बार चेक करो कि आपने ऐसे ही उसको बनाया है या नहीं। एक सेकंड। गाइस, जिसका बन गया दे हैव कॉन्कर्ड विद पेशेंस, ओके। मैम जिसका नहीं बना है उनका पेशेंस लेवल ज्यादा है, अभी भी बना ही रहे। मैम एक बार और देख लो आप मैम। ठीक है मैम। एक सेकंड मैम जीत हियर। या निखिल सर स्पॉटलाइट प्लीज जीत पे। ठीक है मैम। एक सेकंड ना जीत। यस जीत, आपका सिर्फ अभी वो थोड़ा आप ओपन अप कर सकते हो। लाइक आपका फिलहाल के लिए ना ऐसा थोड़ा सा फ्लैट बना, आपने साइड से किया ना, अभी उसको एक साइड से ऐसे पकड़ो एंड उसको बीच में से प्रेस करना ऐसे। आई गेस ही इज प्रेसिंग इट फ्रॉम रॉन्ग साइड। हाँ ऐसे सारे उंगलियों से। यस यस एग्जैक्टली, प्रेस इट इन द सेंटर, लाइक सब पॉइंट्स एक साथ मैच होने चाहिए ऐसे। ओके मैम। मैम इकरा हियर। यस इकरा यस, जैसे कि मैंने अभी बोला ना जीत को, like this. Ma'am, this one or this one? Any side that you want. See here. आपका अभी ये ऐसा कुछ x जा रहा है ना, ऐसा कुछ है x. Yes, ma'am. Okay, so just put one side of it and इसको ऐसे fold करना है ऐसे. Okay, ma'am. तो जो है ना अंदर वाले, सेंटर वाले जो अंदर के रहेंगे ना, उसको ऐसा fold करना है. Can you see everyone? Thank you. Yukta, yes. Yukta, yes. Yes, Yukta, again सेंटर से थोड़ा सा उसको ऐसे प्रेस कर लो ताकि जो आपका स्टार है ना वो थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए। ऐसे यहाँ से। हाँ राइट। तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो अंदर के साइड है ना, उसको सिर्फ ऐसे प्रेस करना है। ओके एवरीवन, तो ये सारे आपके इसके साथ करना है। मैम लाइक दिस। यस, बट थोड़ा और प्रेस करोगे तो आपका जो स्टार है ना वो बीच में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है निकिता मैम, हु हैड अ डाउट? आई वाज करेक्टिंग, सॉरी आई फॉरगॉट। I don't have any doubt right now. Right now it's not fixing actually. No, I was actually correcting a student. No, I forgot her name. Ma'am, look it now. थोड़ा सा और प्रेस कर। Ma'am, look it now. Yeah, थोड़ा सा और। See the hand. ये दिख रहा है इधर। हाँ, कर और अच्छे से। Yes, from all the sides. हाँ, exactly. So all दोनों हाथ से use both the hands and then do it. Okay. Get all your points in the center ताकि आपको सेंटर में ये स्टार मिले। ऐसे प्रॉपरली प्रेस करो उसको, नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो। अच्छे से इंटरलॉक किया है आप लोगों ने। मैम अब तो काफी इंटरलॉक हो गया। Exactly. The more you fold it, yes, Sana, yes, you're right. The more you fold it, the more stiff and interlocking it is going to be.
ओके मैम। पूजा थोड़ा सा और प्रेस करो उसको। निक्की मॅम तुमचं दाखवा। निक्की मैम Can you see? निकिता मैम Halfway. ओह नाइस, बट थोड़ा थोड़ा निकल रहा है शायद। हाँ, that's the problem. एक जगह से कर रही Ma'am. दूसरी जगह पे दिमाग खराब हो रहा है। मॅम हे असं करायचंय. कसं करायचंय एक सेकंड थांबा। सोनम, is that you? Yeah, ma'am. जिया. सोनम एक सेकंड ना, सोनम और जिया। हाँ. Sonam. ओ सोनम Ma'am, बेटा I've tried a butterfly. Yeah. Nice. Can you identify it's a butterfly? Yes, you can. I'm going So I right. think you guys have developed an interest with origami. Now you can experiment. I have done a lot of experiments. I'll be showing it to you all in a while. So just after this we are done. मॅम हे असं फोल्ड करायचं आतमध्ये. हो बरोबर, असं फोल्ड करायचंय. आणि हे वाले आउटसाइड. नाही ते नाही आउटसाइड फोल्ड करायचे, ते तसेच ठेवायचे आतमध्ये, सगळे आतमधले. सगळ्या बॉक्सांचे हे असं केलं, मध्ये स्क्रीन गेलेली माझी. तू हे बघ, तुझं स्क्वेअर मागे आहे, स्क्वेअर बाहेर आहे, ठीक आहे. आणि ट्रायंगलला त्याच्या आतमध्ये घातला. हा, मग तुझे स्क्वेअर असे बाहेर येतात चारी बाजूनी असे, है ना. सगळे 4 पॉइंट तुझे असे बाहेर आहेत, राईट. तर ह्याला ना आतमध्ये असं फोल्ड करायचंय सगळे 4. बघू. हा, हे करेक्ट आहे. आता असं काहीतरी मिळालं, बरोबर. आता दुसरा जो असेल ना, आय हॅव अ स्मॉलर वन. एक सेकंड. हा, तो एक बडा एक छोटा आहे, सो प्लीज ऍडजस्ट. असे 2 आहेत तुझ्याकडे, राईट, है ना. तर हा कोपरा आहे ना, ह्या पॉकेट मध्ये घालायचा आहे, आणि हा कोपरा आहे तो इकडच्या पॉकेट मध्ये घालायचा आहे. अच्छा, ठीक आहे. असे 4ही बाजूचे करायचेत आपल्याला. तर हे 2 जे आहेत ना आतमध्ये ते असे दिसतील. एक कोपरा आतमध्ये गेल्यावर हा असा दिसेल, आणि दुसरा बाजू जो आहे ना हा वाला, तो मी इथे घालणार ह्याच्या आतमध्ये. त्याच एकाच ह्याच्यामध्ये मागचं आणि पुढचं असं दोन्ही घालायचे. दोन्ही ह्याच्यामध्ये हे 2-2 टाकणार आहे मी. हो, एकमेकामध्ये घालायचे ते असे. हे 2 पॉइंट. हा, 4ही पॉइंट. हा एक झाला. ओके, सो दीज आर युअर 2 पॉइंट. हे 2 आणि हे 2 झाले ना, दुसऱ्याचे 2. नाईस. हे 2 झाले. तर असे 4 पॉइंट झाले. तर हा वाला पुढे मागे एक येणार असा, बरोबर. त्याचे एकमेकामध्ये घालायचे. आता कळालं जिया, तुला कळालं आता? सर्कल बनवायचं आहे ना, सर्कल. हो. आता येईल करायला? दाखवते तुम्हाला 2 मिनिटं. ओके, चालेल, कर. जिज्ञा, नाईस. जिज्ञा, यू कॅन प्रेस इट. अजून थोडं मधून प्रेस कर. मॅम, युसू. 1 second, let me check. Can you repeat your name again? Yusu. I'm in Spotlight. R in the phone is too irritating to swap you through screen. Yes, nice. You can still press it a little more from one of the sides, ताकि आपका जो स्टार है ना वो क्लियरली बीच में दिख के आए. एक मिनट, आप दिखा सकते? हाँ, तो ये जो आपका साइड है ना, व्हाट इज अभी कैसे हुआ है पता है? ये आपका साइड फ्लैट है. ओके, इसको ना ऐसे प्रेस करना, साइड से जहाँ पे आपके जॉइंट्स आ रहे हैं ना. अभी मैंने कैसे पकड़ा है? ऐसे पकड़ा है. ओके, आपका ये दोनों साइड इसे फोल्ड करना. ठीक है. और फिर आपका ऐसा कुछ पॉइंट्स आएगा ना इधर से, तो उसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करना है. ठीक है. तो बेसिकली अभी जो फ्लैट है ना उसको थोड़ा सा फुलाना है. तो आप सब फोल्ड्स को वापस एक बार प्रेस कर लें. How many still stuck?
किसी ने पेजेस लूज किया है या अभी भी चल रहा है? डन। ओके, सो आई थिंक इवन आई एम डन। अभी मैंने ये साइड से प्रेस किया था, यहाँ से, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू इज बीच में से ऐसा सारे एक साथ पकड़ के ना, आई विल गेट इट टू वन पॉइंट एंड देन प्रेस इट लाइक वेरी फर्मली, ताकि मेरा जो स्टार है ना वो बीच में से उठ के आए। ओके, लाइक दिस। सी, ऐसे। नाइस। साइड से ये मैंने तो फोल्ड मारे ही है, तो ये वापस मैंने सील कर दी। Okay, so this is what my outcome has come. Nice, Sharaka. Sharaka is nice. अभी किसी को बर्थडे डेकोरेशंस बनाने रहेंगे ना, तो I think you can make it. सबको बिठा दो। मैम मैंने बर्ड्स बना दिया। Can you tell me your name? प्रियंका। मैंने बर्ड्स बनाया, मुझे एक्चुअली आया नहीं स्टार बनाने। ओह, अच्छा, तो आपने पेपर कटिंग से बना दिया? किरीगैमी। आपने किरीगैमी कर दिया। नाइस। चलो, पेपर से भी काफी कुछ कर सकते हैं, ये पता तो चला। दर्शना, आर यू डन? नो? लूजिंग पेशेंस? Ma'am, going on. I'll show you. I'll show you, and I won't Yeah, get it down, sure. but I'll show No, you. we're not expecting an outcome. We're just trying to develop an interest so that you can try. Maybe not this. Maybe try something It is else. fun, and it is keeping me busy actually. Ma'am, what else can we try? What else can you try? Okay, so I'll show you those. What else can you try? I have a few of them. So this is a tricon. Okay. Modular tricon. Yeah. Where did you put the sides? Like, how did you join them? So basically, these are three different folds that I've interlocked. अगर मैं इसको खोलने जाऊँ, यार इसको खोलने का मन नहीं करता है। Okay. But let me show you one second. So basically, ये कुछ ऐसे 3 pieces है। हाँ। ओके, अलग अलग 3, जैसे कि हम लोग ने ये 5 फोल्ड किए थे, वैसे ये अलग मेथड से ये 3 पीसेस है, जिसको मैंने एक साथ इंटरलॉक किया है ऐसे। ओके, so this is called as the modular tricon. Then I have a diamond in different sizes. So this is again paper folds, no cutting, nothing. Okay, I have a smaller one also. Okay, so I have even a smaller one than this. Okay, so these are the different sizes of diamonds that I have made. This is a 4-fold diamond. You have a 6 or 8, which looks like a proper diamond also. The next one is a transferable origami. Okay, so basically, ये starting में कुछ ऐसा है. Okay, and then you end up getting this. How? Yeah. So this is just something that you push. Oh, the sides come out. Yes, from all the sides. You just push it inwards. I think I folded it too tightly. ये घूम ही नहीं रहा अंदर. You can use the other one then. Yeah, just a second. Almost done. Okay, so I'll show it on to this. See this. Okay, so you just have to open the edges out.
it goes to a hexagon. And then you just push it inwards again. So again, this is interlocked in each other. So So for this, what do we have to make? It's a square or a triangle? Ma'am, Jia. Yes. Apoga. Okay. एक second, huh? Where is Jia? Yes. हाँ जिया राईट. आता तुला बरोबर मिळालं. ओके. करेक्ट. दोन पीस दोन साईडचे टाकायचे होते ते मिस झालं माझं. हो ते बरोबर मिळालं. ते इंटरलॉक झाल्यावरच हा शेप मिळतो. आता त्याला ना फक्त थोडंसं दाबून दाबून ना कॉर्नर्स थोडेसे असे शार्प करते. अच्छा. असं मधून ना असं सगळं एकसाथ पकडून असं हा जसं तू आता धरलेस तसं हा तसं दाबत राहा आणि हे जे एजेस आहेत ना ह्याला थोडंसं असं परत दाब. हा ठीक आहे. म्हणजे ते प्रॉपर दिसेल शार्प एकदम. Okay, so this is how I get after I interlock it further. Ma'am, is that a triangle or what? It's a square. You start with a square and then there are folds which you do. Okay, so this is one. Then do I have anything else to show you? No, I think I'm done with that. Okay, so this is another tricon that I've done. So there's a few origamis that I have done. You might try different variations, and we have a few. One that is done with the diagram. Okay, so if you might have seen your gift boxes and all that you see, they are done with diagram and with paper fold. So there are diagrams being available if you want to make an hexagon, if you want to make an octagon, if you want to make a prism. Okay, so basically ऐसा कुछ diagram आता है which you have to draw first. ठीक है, like more of paper folds and this, if you see. Okay, then you cut it as per the diagram, and then this is what the piece is what you get as per the diagram after you cut it. ठीक है, तो जैसे आपको लाइंस दिख रहे हैं वैसे आपको सिर्फ फोल्ड करते जाना है इसको अंदर की तरफ बाहर एंड दिस. Okay, so just let me. And फिर इसको एक साथ आपको स्टिक करना है. So after you stick it together, you will get a prism like this. I've not stuck it together, so. Okay, so you get something like this. Ma'am, even I have. Can you show it again? Yeah, so you get various diagrams. So after the diagrams, you can just cut it and then fold it wherever your lines are. Okay. And then basically यहाँ पे आप लोग glue लगाते हो. ये जो portion है that is for the glue portion, gluing portion, and then you stick it under. Ma'am, is this kirigami? No. This is origami, but a type of origami where you use kirigami, yes, an upgradation basically in that. Okay, so this is what I get. Ma'am, it's looking so nice. And even I Yeah, have. so you can try various 3Ds in this. You can do an hexagon, you can do any polygonal this. I'll show you a few works of our students that they have done. Nikita ma'am, can you please share slide? Yes. Okay, so this is what we did today. Okay, so there are a few steps. If you can revise, this is what we learned. So I hope you guys enjoyed doing this. Did you? Yes, ma'am. So are you going to try a few Yes, more? ma'am. Yes, ma'am. We enjoyed it a Yes, lot. ma'am.
Are you going to try doing a few more with that? जैसे कि I think she's already tried a butterfly. So anything else that you would love to try? We will try. Yes. Hope so, you guys do. मेरे पाय दिखते कागद. Okay, so this is the prism that I just showed. So if you put it together in various other sizes and various other shapes with colored paper or any kind of paper, this is the outlook that you can create for your house also, or even somewhere else that you want to make it a little more creative. So basically the diagram that I was talking about, measurements, as you can see, and it's the outcome. So basically various pyramids I made and then put it together. You can make it something like this. Sir, observe and discuss. Okay. Next slide, please. Keep some water, the plastic cup, and next. Okay, so this is what I was talking about. These are the few origami projects that our students have done and experimented with. Okay, so you can see they've created wall arts, they've created various other formations, creative formations that even you can try. And after you try, do let us know and tag us. So in the middle, if you can see, like I was saying, the same concept of your prism that I showed. उसी के basis पे we've done different kinds of polygons and we've created this installation for our very own exhibition that we have, the annual exhibition that we have. Okay, so I hope you guys do the same. किसी को पिकाचू पसंद है? Ma'am, look at. I'm also made rabbit. Yeah, I'll just. Ma'am, how is this? Ma'am, how is this? See, after we are done with the share slide, okay? ये दिख रहा है? So one of our students, she made cubes and she put lights in it, which is giving it a very different kind of feel. So even if you have your Diwali lights, you can put up things around it and then make it a nice, interesting one. Next. So same way, ये वाला भी. So I hope you try such different kinds of origamis and formations, and then let us know how you enjoyed it, your experience with it, and also tag us so that we get to know what you've done. Okay? I think अभी भी सारे interlocking में लगे हुए हैं. आवाज भी नहीं कर रहे कुछ. No मैम, मेरा तो complete हो गया है मैम. Jeet was showing us something. Yeah, Ma'am, look this. I'm also made rabbit. You made rabbit. Oh, nice. So try different things with papers. Try different techniques with origami and tag us and let us know what you've tried. Okay, we'll be happy to see what the outcome is. And I hope you enjoyed. Did you like Yes, it? Did you ma'am. not like it? This or this? Okay or very good? Bye. Very good? Yeah, Very good, ma'am. Super, ma'am. Mind blowing. Mind blowing, ma'am. Okay. So do try, and after you're done, let us know. Seher abhi bhi ghussi padi hai usko interlock karne. Everybody actually, even Darshana, I can see Seher, I can see even I think I've given you today evening का अच्छा खासा time. You can sit. मैम लीना मैम ने कुछ नहीं बनाया क्या? मैम लीना मैम ने मैम नहीं आपने बनाया क्या क्या? किया? मैम दिखा दीजिए हमें भी. किसी को मेरी याद नहीं, सिर्फ जीत को ही मेरी याद है. मैंने हाथ पे बनाया है. लीना मैम ने तो पूछा था. ऊपर का एक मैम पेपर. कंटिन्यू मैम. हाँ, कल तक बन जाएगा शायद.
शाम का टाइम पास दे दिया ना तुम लोग इसको गुजराते बैठो मैम जीत हियर मैम कंटिन्यू करो जीत मिलेगा Guys, are you even going to be leaving the meeting or still going to be engrossed doing interlocking? Ma'am, actually, I think some of the paper quality is like very thin. So that is making Yeah, that does happen. Yeah, that's why we had specified either colored papers or you can go for origami papers or chart papers. Chart papers, I think it's very stiff, so you can easily. I had used these things. I have the same one. I use the same thing. What time laga? So and also it was first time, so ठीक है चलो यार होता है यार सीख लेंगे धीरे धीरे थोड़ी one go में सब आने वाला है. Guys, bye तो बोल दो यार अभी भी Bye. Bye. Guys, do just continue and tag us. And FD Washi. Yes. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Friends that you try also do tag us. Bye. Bye. Welcome, Pooja. Welcome. Bye. Bye, ma'am. Thank you so much. But I'll send the pic. Yeah, sure. We'll be waiting for it. Yeah. Oh, finally we have got through it. Like almost done. Okay, bye, ma'am. Bye. Bye.